Janab, welcome back to JIRGA, and once again we have Bilal Qureshi with us, the aviation geek, the aviation enthusiast. And Bilal, welcome back. Thank you again for joining us. Thank you, Hassan. Thank you for having me. Bilal, in the last episode, you told us, about your background, about your link with aviation and your portfolio and all. और हमने उसमें PI वगैरह की थोड़ी बात की, थोड़ा जनरल एविएशन इन पाकिस्तान की बात की. So as we were proceeding with this, ठीक है, I talked to my team and I was like, कि of course we will be having active airlines in the episode, but I was like, there is one airline we cannot miss, ठीक है. It held a big chunk in one time, ठीक है, and that is Shaheen Airlines, right? We did और actually talk a little bit in last episode yes, also. yes, exactly. हमने थोड़ा उस पर लाइट शेड किया था. आज थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे कि where, why, how, when, what, इस तरह से. तो honestly, I did not have the privilege to travel on Shaheen. ठीक है. Did you have the privilege? And if you did, क्या experience था? What is the opinion you carry on with yourself today about Shaheen? Okay, so when I had the opportunity to fly with Shaheen Air, that was back in 2014. Or if the audience doesn't know, Shaheen Air का जो peak start हुआ था वो 2015 के बाद हुआ था when they started to introduce A320s. So I basically flew with Shaheen Air before them introducing A320s. So जो शाहीन एयर की एक कह लें कि जो एक ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड हुई थी अपने डिमाइज के कुछ अर्सा पहले, मैंने उससे काफ़ी अर्सा पहले मैंने शाहीन पे फ्लाई किया था. एंड दैट वाज फ्रॉम जद्दा टू इस्लामाबाद व्हिच वाज माय यूजुअल राउट ऑल माय लाइफ, बचपन से लेके. और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो फिर देन आई स्टार्टेड टू फ्लाई टू लाहौर. So with Shaheen Air, at that time in 2014, things were very simple. Basically, they had Airbus A330s. First time, I believe, in Pakistan, someone brought A330s, if I'm not mistaken. They were also the 330s, the bigger version, the Dash 300, but they were a little bit old. पुराने, कुछ थोड़ा काफी पुराने थे. और they were all in all economy class. Pura Jahaz was in economy class. Since Shaheen Air was, again, if I'm not mistaken, they were not allowed to carry cargo in the bellies. So Shaheen Air used to give that to the customers. So because already unki all economy seats thi, so they used to get the maximum chunk out of any market के हम उनको किसी तरह let's say अच्छा खाना दे दें, ज़्यादा baggage दे दें. So I remember Shaheen Air was the first airline from Saudi Arabia to offer 55 kg on economy class ticket. So on one passenger, and additionally 10 liters of Zamzam as well, or I guess 5 liters of Zamzam. तो ऑलमोस्ट 60 किलो इकोनॉमी क्लास पे मिलना और बहुत सस्ती टिकट ऑलमोस्ट ऑलरेडी, क्योंकि शाहीन का जो बिजनेस मॉडल था बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन कंप्लीटली लो कॉस्ट, कि भाई कंप्लीटली लो कॉस्ट. लेकिन क्योंकि अगेन पाकिस्तानी पैसेंजर की थोड़ी सी एक मेंटालिटी डिफरेंट है और उसकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है, तो दे यूज्ड टू कीप द हॉट मील्स और दे यूज्ड टू गिव द बैगेज आल्सो. लेकिन उसके अलावा हर चीज वाज टोटली लो कॉस्ट, कि आपका ऑल इकोनॉमी जहाज, आपके मैक्सिमम ट्रिप्स, उसके अलावा आपका क्या इसको कहते हैं एक जैसे जहाज. सो उसकी रीजन यही थी कि दे वर अडॉप्टिंग अ सिंपल मॉडल और टू ग्रैब द राइट पीपल. अब ऑब्वियसली एक बंदा जो बिजनेस क्लास में सफर करता है या जो एमिरेट्स पे सफर करना पसंद करता है विद ऑल द फ्रिल्स एंड ऑल दोज शाइनी थिंग्स व्हिच कम्स अलोंग, वो शाहीन पे फ्लाई करेगा. शाहीन पे कौन फ्लाई करता था? हज उम्रे वाले लोग, और जो यहाँ की लेबर मार्केट है जिसको बस के टिकट जितना किराया चाहिए था, जो कि बस वो उसको जद्दा से लेके उसके होम टाउन तक पहुंचाते. सो दे ग्रैब्ड द राइट मार्केट, दे हैड द मेजर चंक, दे वर राइट बिहाइंड पीआईए, क्योंकि उनके पास वाइट बॉडी जहाज थे. इस वक्त जो आप शाहीन एयर के जहाज उड़ते देख रहे हैं 330s, उन 3 A330s में से 2 एक्स शाहीन एयर के हैं. यानी कि वो 2 जहाज पहले पाकिस्तान में ही शाहीन एयर के साथ फ्लाई कर चुके हैं. और उनमें से एक A330-200 जो है बेसिकली वो पीआईए ने इस वक्त वेट लीज किया हुआ है
जॉर्डन एविएशन से। जब वो शाहीन एयर खत्म हुई तो वो जहाज लेसर ने जॉर्डन एविएशन को दे दिए। तो वो जॉर्डन एविएशन वालों ने उसकी लिवरी वगैरह चेंज नहीं की, बस उसके ऊपर शाहीन एयर की जगह जॉर्डन एविएशन लिख दिया, बाकी उसका जो पूरी लिवरी है वो अभी तक वैसी की वैसी है जैसी थी। सो द घोस्ट ऑफ शाहीन एयर स्टिल फ्लाइज इन पाकिस्तानी स्काईज, क्योंकि मैंने आपको बताया दो सीरीन एयर के 330 हैं, वो एक्स शाहीन एयर है, और आई गेस उनकी रजिस्ट्रेशन BNG एंड BNF है, APBNG एंड APBNF। मैं तो फोनेटिक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, ब्रावो नवंबर फॉक्सट्रॉट नहीं बोल रहा, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दैट्स द केस। तो यू बिलीव के इट वाज वैल्यू फॉर मनी? Yes, because it was low cost, extremely cheap, and with the hot meals as well. Just a normal hot meal, कह लो के साग चावल, बिरयानी हो गई, साथ जो नेस्ले का रायता मिलता है साथ वो हो गया, बस बिरयानी भी चाय रुक मिल जाते हैं गई। मेरे ख्याल है। ठीक है। सो बिरयानी आती थी शाहीन एयर में, आई रिमेम्बर। So the thing is, when such things are available for a very cheap price, then you are definitely, you can increase your market share very easily. अभी आप देख लें, सीरीन एयर ने भी जब अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट की थी, सीरीन एयर ने भी जो है वो अपना ऑन बोर्ड जो मील है उसके थ्रू किया था कि जी हमारा जो ऑन बोर्ड मील है वो डेली नया मेन्यू होता है, यानी कि डेली नया मील होता है, हर फ्लाइट पे डिफरेंट मील होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही उन्होंने करने की कोशिश की थी, बट डेली न्यू मील से मेरा जो समझ आती है बात वो यही आती है कि आपकी हर फ्लाइट पे एक नया मील होता है। इसी तरह सीरीन एयर एयर सियाल को आप देख लें, एयर सियाल थोड़ा एक स्टेप और आगे चलेगी। आई एम प्रिटी मच श्योर कि इट वुड बी कॉस्टिंग देम a bomb to have a 2 course meal on an Airbus A320 on a 1.5 hour flight, जो कि आप ज्यादा से ज्यादा 10-15 हज़ार रुपए की बेचते हैं। लेकिन क्या है कि क्योंकि और कुछ मिले ना मिले, खाना अच्छा, वो शादियों वाला हिसाब है पाकिस्तान में कि जी अगर आपको जो है ना शादी में और कुछ अच्छा हो या ना हो, खाना अच्छा हो तो लोग तो कहते हैं जी शादी खाना। अच्छी थी। हाँ, वरना आप देख लें सारी जिंदगी लोगों को ताने मिलते रहते हैं कि यार फलाने की शादी में खाना खाया था मिला ही नहीं, बोटी नहीं मिली तो ये नहीं मिला। तो वो जहाज का भी बेसिकली यही है। तो एयर सियाल, अभी फ्लाई जिना आ रही है, फ्लाई जिना सबकी उम्मीदों पे पानी फेरेगी। कोई एक जो है ना अच्छा। नूडल का डब्बा भी आपको नहीं देगी, एक मफिन भी नहीं देगी आपको, अगर देगी भी तो पैसों का देगी, लेकिन आपको वो टिकट इतना सस्ता देगी कि बाकी बोलेंगे यार छोड़ो दफा करो, खाने का भी टिकट तो सस्ता मिल रहा है ना। सो दैट इज द लो कॉस्ट मॉडल। एयर ब्लू, एयर सियाल, सीरीन, they all are basically trying to follow the low cost model, and it's good, but they are somehow hybrid. So आपकी जो सीरीन है और जो एयर सियाल है, बेसिकली दे आर द ब्रेन चाइल्ड ऑफ शाहीन एयर। ठीक है, वो उसी तरह का मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं डेस्परेटली। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें, सीरीन एयर 737 लेके आई, अगर कुछ लोगों को याद हो तो शाहीन एयर ने भी 737-400 यूज किए थे, फिर उसके बाद दे वेंट टू 320s। अभी एयर सियाल भी 320s लेके आई, अब वाइड बॉडी में वो फिर 330s लेके आने लगे हैं। सो दैट्स द केस बिकॉज जो शाहीन एयर थी उसने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आप A330s एयरबस फैमिली के साथ आप पाकिस्तान में ऑल इकोनॉमी सीट्स पे बेहतरीन प्रोडक्ट चला सकते हैं। सीरीन ने थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप लिया है, वो ये है कि सीरीन प्लस उन्होंने अपने 330s में इंट्रोड्यूस किया, विच इज देयर क्लब क्लास, आई वोंट से बिजनेस क्लास, बट इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा नजर नहीं आएगा। तो अच्छा, बेसिकली सो यू वर अ सेटिस्फाइड कस्टमर, यू थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। अब लास्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ Well, wait, let me tell you, I was a satisfied customer only in the case because that time my priority, and I did not had such expectations on board for the customer experience. हाँ, मेरी फ्लाइट जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे लेट हुई थी और वो 2.5 घंटे में जहाज के अंदर ही बैठा हुआ था, बट अगेन इट वाज अ डायरेक्ट फ्लाइट, इट वाज अ चीप फ्लाइट, and I was getting what I paid for in very cheap fare. So yeah, it was okay. I won't say कि भाई बहुत अच्छा या था या बहुत बुरा था, but it was okay because I get what I pay for. शहीन की सीट कॉन्फ़िगरेशन कैसी थी? अमूमन हमारे अभी अभी फ़िलहाल जो मुझे कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं कि कुछ एयरलाइंस हैं कि अच्छा अगर उन्होंने टिकट कॉस्ट रिड्यूस किया है तो दे आर मूविंग अराउंड इन सीट कॉन्फ़िगरेशंस और लेग स्पेस। Tell you one thing, Shaheen was operating all economy,
ठीक है. And on Airbus A330 the usual जो आपकी सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है that is 2-4-2. ठीक है. 2 seats on the right side, then 4 seats and then 2 sides. ठीक है. So ठीक है. basically it becomes 8 seats in one row. So again I would say that's the usual configuration. ठीक है. जो कि आपको I have flown on A330s of Saudi Airline, Qatar Airways, Etihad Airways if I'm not, no, sorry, Etihad I have not. Yeah, Saudi Airlines and Qatar Airways I have flown with A330s. इसके अलावा एक यूक्रेनियन एयरलाइन थी जो कि इसकी थी, एयर ब्लू ने वेट लीज पे जहाज लिए थे, उनका भी एक A330 था. मैंने उस पे फ्लाई किया था. उसको हम लोग मदनी त्यारा बोलते थे बिकॉज उसकी बड़ी एक जो है ना सियान और ऑरेंज कलर की लिवरी होती थी. अच्छा. The worst seating configuration that I had seen on an A330 was of that aircraft, जो कि Windrose airline का था. That was basically 333. So they had fit 9 seats instead of 8, which is the standard on all worldwide airlines on A330, which is standard basically. But they had fit 333, which is 9 seats a row. And that was an A330-200. It was pretty old. It's now has been taken off from service as well. But that was the worst seat configuration I have had ever seen. और मैं उस सीट में उस वक्त तो खैर मैं बहुत पतला होता था, तो मैं उसमें पूरा आ गया था, लेकिन मेरा लैपटॉप पूरा नहीं आ रहा था, मुझे याद है, बिकॉज मुझे एक साइड से थोड़ा सा उठा के रखना पड़ रहा था क्योंकि वो सीट इतनी छोटी थी. ठीक है. तो अच्छा, when do you think was the prime time for Shaheen? कब शहीन ने मार्केट का मज़ा लिया है? They got the fruit or they never got the fruit? What do you think? शाहीन ने मार्केट का मजा बेसिकली तब लिया जब शाहीन ने 10 के 10 A320 एक साथ ऑपरेट किए. और ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन शाहीन एयर हैड 8 एयरबस A330s, क्योंकि उनके जो 300 की जो फ्लीट थी वो एग्जिट होने वाली थी, वो जाने वाली थी सर्विस से क्योंकि वो अपना टाइम पूरा कर चुके थे. और 5 उन्होंने 330s लिए थे KLM से. दे वर एक्स KLM. I never had an opportunity to fly on them, neither I had seen them from inside, but the reviews which I had from my friends, they were absolutely brilliant. और जब आपके पास अवेलेबल सीट्स, मैंने पिछली एपिसोड में भी बताया था कि आपके पास जब अवेलेबल सीट्स काफी आपके पास अवेलेबल सीट्स होती हैं, तो आप उन सीट्स को रूट्स के ऊपर डंप करते हैं. ठीक है. और जब आप उन सीट्स को रूट्स के ऊपर डंप करते हैं, आप अनाउंस करते हैं कि भाई हम दिन में कराची से लाहौर के 5 से 6 ट्रिप्स करेंगे अप एंड डाउन, कराची लाहौर, कराची लाहौर, कराची लाहौर. दैट मेक्स A330 या जो भी जहाज उस पर उस वक्त फ्लाई कर रहा है, multiply those number of times which they are going to fly each sector, the number of seats available on that route on that particular day. फिर आप उसको महीने पे मल्टीप्लाई कर लें कि आपको उस पूरे महीने में एक रूट पे कितनी सीट्स मिल रही हैं. जब आपके पास बहुत ज्यादा सीट्स इन हैंड होती हैं तो फिर आप अपनी प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली आपके पास सप्लाई ज्यादा होती है, आप फिर आगे से डिमांड भी उसी तरह की हो, तो फिर आप अपनी मर्जी की प्राइस पॉइंट सेट कर सकते हैं जिसमें आपको फायदा भी हो, पैसेंजर भी खुश रहे, पैसेंजर को अच्छा प्राइस पॉइंट मिले और आपकी फ्लाइट्स भी ज्यादा से ज्यादा चलें. अब PIA बेसिकली हमेशा क्या करती थी, क्योंकि बीइंग द लार्जेस्ट एयरलाइन उनके पास 777s थे. अब 777s बेसिकली 330 के आगे भी बला ही है ऑब्वियसली, भले वो वाइड बॉडी है लेकिन 777 इज स्टिल अगेन बिगर एयरक्राफ्ट. सो PIA यूज्ड टू जस्ट स्केड्यूल 777 पोजीशनिंग के लिए वो फ्लाइट लगा देते थे, और वो कह लें कि पूरी की पूरी 300 बंदों की फ्लाइट जो है ना वो निकाल के ले जाते थे. बट स्टिल उस टाइम पे सबको लोड मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो नेशनल एविएशन पॉलिसी 2015 की आई थी उसके अंदर बहुत सारी चीजें आसान कर दी गई थी, थोड़े से टैक्सेस कम किए गए थे, थोड़े से ही, ज्यादा नहीं, थोड़े से ही कम किए गए थे. उसके अलावा आपका जो पैसेंजर ग्रोथ थी वो स्टेडीली बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को जो है ना, ऑब्वियसली जब आपको फेयर अच्छा मिलता है तो लोग ट्रैवल करते हैं. तो जो आपका एथनिक ट्रैवलर है उसको तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका मिडिल क्लास है, जिसकी लेट्स से फैमिली है या जो बिजनेसमैन है, ये सारे लोग फिर ट्रैवल करते हैं. तो इन लोगों ने किया, और 2015 से लेके 2018 अर्ली 2018, यानी कि बिफोर
मार्च 2018 शाहीन एयर ने अपना जो है ना गोल्डन टाइम देखा और एट अ टाइम 19 जहाज उन्होंने ऑपरेट किए. आई विल रिपीट 5 एयरबस A330s, 10 एयरबस A320s और उसके अलावा 7 A319s. तो 7 I believe, yes. स्पीकिंग ऑफ 2015, ठीक है. Of course, we know, Shaheen, the reason it was included in this season was कि Shaheen had a legacy back then. Yeah, चलो, at least had a brand identity back then. मैं ये कहूँगा कम से कम. And it was an international carrier, ठीक है. कतर, दुबई, ईरान, कुवैत, ओमान, इधर आपका Shaheen Air ऑपरेट कर रहा था, राइट. बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है. अब coming down to again something which intrigues the audience and curious थी. 2015 नवंबर में जो एक, मैं क्रैश नहीं कहूँगा लेकिन एक छोटा सा हादसा मैं कहूँगा चलें. मैं वो हादसा कभी भूल नहीं सकता because अच्छा, that incident basically changed my life. really? जो कराची से Yes. लाहौर की फ़्लाइट थी, फ़्लाइट NL142. Yes. Yes. अच्छा, how did it change That your was life? on 3rd November 2015. That बिल्कुल was a ऐसे ही. Boeing 37. 737-400. Captain Azmat was the pilot in command. So how did it affect you? So basically, whatever you see in front of in me through Aviation Geeks, it basically started. Everything started that day. Really? अच्छा, wow. Yes, I'll tell you a little bit of story on that. ये इंसिडेंट जब जिस दिन हुआ, we were in our campus और हमें जैसे ही पता चला कि जी इस तरह स्किड हुआ है रनवे पे जहाज और लैंडिंग गियर उसका टूट गया. वो जहाज अभी भी जो है ना, आपको अगर आप बहरी अब that was back in 2018, maybe if it's still there. लाहौर पे 2 शाहीन एयर के जहाज 737 पड़े हुए हैं, अभी भी शायद पड़े हुए होंगे फॉर श्योर, आई बिलीव. और उनमें दोनों का सेम ही प्रॉब्लम था, दोनों ने रनवे स्केट किया था. सो उस दिन हम लोग अपने कैंपस में थे. जब हमें खबर मिली तो हमारे एक उस्ताद हैं, आई वुड लाइक टू टेक हिज नेम इज नूर अब्बास मिर्जा. ही टोल्ड अस गो टू द एयरपोर्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. अच्छा. हम लोग पागलों की तरह बच्चे बच्चे छोटे छोटे जो है ना एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं क्या हो गया क्या नहीं हुआ और ये वो. दैट डे बेसिकली आई फाउंड आउट what I love. On that day, Wow. basically, I got into this content making and covering aviation और उनको पढ़ना और publish करना. We started back then Aviation. Unfortunately, we could not continue because of certain reasons. However, that name was later on then used by some students in US, and they launched the magazine with that name, Aviation. You can Google that, by the way. So that day, basically, we in fact then we were contacted by Captain Azmat's, I believe, niece, I guess, या उनकी कोई किसी कजिन की बेटी थी या वट एवर जो भी थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. शी कॉन्टेक्टेड अस बिकॉज उस वक्त उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे थे कि दैट ही वाज ड्रंक. Yep. सो So coming to that specific thing which you just stated, ठीक है. First of all, तो we say this case someone's bad luck is someone's good luck. तो चलो, it's a positive thing. well, But I cannot comment on that thing because it was never confirmed by any reports. It was still unsure that was he really drunk or was he not. अब मेरा क्वेश्चन ये है, सी हियर्स माय क्वेश्चन. ऑफ कोर्स जो मैं कहूँगा क्रैश लैंडिंग की जो वीडियो, इट्स पब्लिक, राइट. वी सीन के द प्लेन टचेस द ग्राउंड एंड उसके बाद फिर एक टायर कोलैप्स होता है, राइट. सो व्हाट्स योर इनटेक ऑन दिस? मतलब कि अच्छा, एक लैंडिंग गियर कोलैप्स था. अगर तो लैंडिंग गियर कोलैप्स था तो उसका पायलट के ड्रंक होने से कोई रिलेशन बनता भी है? फॉर इंस्टेंस वी से कि ही वाज ड्रंक, या जो मैंने रिपोर्ट्स थोड़ी बहुत पढ़ी हैं उसमें ये मैंने पढ़ा था कि भाई उनका जो ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन लेवल था दैट वाज 0.83 और नॉर्मल अलाउड जो है वो 0.03 है, राइट. जो एलिजिडली था, राइट. For instance, let's just believe this. Of course, it's not allowed, unethical है, wrong by all means. अगर ट्रू था भी, क्या लैंडिंग गियर का कोलैप्स इस चीज़ से कनेक्टेड हो भी सकता है या नहीं हो सकता? देखें, again, it's a technical question and I'm not the right person to ask this question, but I can give you a few points.
अच्छा. When you are flying and allegedly if you're flying with numb mind or you can say you know short sightedness क्योंकि Mm-hmm. आप ऑब्वियसली आप अपने होशो आवाज में नहीं हैं Mm-hmm. आपको लगता है कि आप हैं लेकिन आप होते नहीं हैं. So at that time, there are a lot of things going on then. And then since your senses are not in 100% capacity, you cannot judge the situation completely. I had since because that event changed my life. So I had spoken to maybe tens of people at Lahore airport that day, and a few of them were from Shaheen Air as well, and a few of them were from Air Blue as well. And basically, they try to defend it. जैसे Mm-hmm. जी उस दिन शायद गस्ट बहुत ज्यादा था, विंड बहुत तेज थी, ये था वो था, फलाना था, ढमकाना था, फनल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था. बट अगेन आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी फ्लाइट. Yeah, I watched it. I watched it. If you have watched it and if any of your viewers watched it, in that movie the pilot basically inverts the whole plane and then he lands it and basically save everybody. Yet he was punished because he was drunk. Exactly. So whether there is a connection or not, you cannot neglect that point that he was not in his complete capacity and he was the pilot in command at that time for sure. That is confirmed. That was confirmed at that time. So yes, it is possible he might could have had a hard touchdown which the landing gears could not sustain, and that's why they collapsed. In terms of the video which is public, ठीक है, of course you'll have at least some information to have at least an amateur guess, right? Do you think there was something abnormal about the approach you saw or the ground speed you saw? And again, I remember this from last time. From last time you said this कि कोई सिर्फ देख के बता नहीं सकता. But from your natural instinct, जो कि एक normal touchdown की video है, was something abnormal about that? I'll tell you one thing. In aviation, you don't give amateur opinions. अच्छा. Either you give opinions with the proper facts, or either you just stay quiet. That's what it should be in aviation, because it's not like and anybody can be an aviation expert. I still remember that day on 8303 day when it crashed. Everyone was like hot and high aa rahe the, captain ko ye kar lena chahiye tha. Although that's the same thing we have discussed in our last discussion. But again, you have no right, since you don't know how things works, since you were not in that situation, you cannot judge the ability of that pilot, which is no more with us. So you cannot give an amateur opinion. So I won't give an amateur opinion. I can give you a factual opinion, which was that at that day it was a beautiful day. It was a perfectly sunny day to fly, and good for flying, and there was no abnormal weather reported. There was nothing such kind of thing which you can expect an incident like that. Again, the drunk thing which is highlighted, I don't know exactly, because we were contacted by one of their family members and we were they were trying to convince us that we should interview Captain Azmat so we can try to remove the speculation which is going on. But still, we were not, we were kids at that time, so we did not get into it because we did not wanted to land ourselves in trouble. So again, it was a normal day. You would not have expected such incident in such conditions. Again, always an incident or an accident is a result of a series of events. उस दिन सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या हुए थे, अब क्योंकि शाहीन एयर एग्जिस्ट ही नहीं करती इसका जवाब देने के लिए, सो वी कांट से. ठीक है. अब there our job is के our motive is के यार at least you walk away with a theory which makes sense, right? Which does not make you look like a fool and does not, जो कि normally I'm sorry but हमारे साथ होता है कि अवाम के ऊपर एक बस डंप कर दी जाती है information and the authorities are like just believe this, right? दो theories हैं, theory A है, theory B है, right? So we'll consider both of them. एक theory है कि चलो he was drunk, right? Theory है. अब मेरा क्वेश्चन पहला ये है, not why he was drunk. पहला क्वेश्चन ये है कि
क्या कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, कोई स्पेशल डेजिग्नेशंस नहीं होती टू इंश्योर, या कोई टेस्ट्स नहीं होते टू इंश्योर पायलट्स सेफ्टी, पायलट्स वेल बीइंग? क्या पता साइकोलॉजिकल तौर पे कोई इशू हो, इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है? अगर नहीं होता, होना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सो सी, पाकिस्तान में एक चीज होती है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि अभी भी होती है या नहीं। और जिस तरह आपने कभी शायद नोटिस किया हो, आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया में ना वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनके हाथ में एक डिवाइस सी होती है जिसमें ऐसी है, वो ड्राइवर को कहते हैं फूंक मारो। ऐसी है बिल्कुल। सो दैट्स बेसिकली दैट, इट्स कॉल्ड डोप टेस्ट। हम्म। सो वो डोप टेस्ट कुछ अरसे के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि फ्लाइट पे जाने से पहले पायलट्स का डोप टेस्ट होता था, हम्म। but pilots used to get offended a lot. I guess it's removed now, maybe. I'm not sure exactly. शुड दे गेट But ऑफेंडेड? well, ethically they should not be, but yeah, प्रोफेशन है again the यार। culture, then again the culture, you know. मतलब आपको आपको समझ आनी चाहिए कि इट्स अ प्रोफेशनल वर्क, इट्स कल्चर, इट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली It's एंड आवर फैमिली, ठीक है? आप ड्रिंक नहीं again, कर, आप ड्रिंक नहीं करे, ठीक है, मे बी, बट क्या पता योर फैमिली इज ट्रैवलिंग ऑन एन एयरक्राफ्ट एंड मे बी दैट पायलट नीड्स टू बी टेस्टेड, राइट? well, that's a debate which I have very little knowledge, so I won't say much on that. नहीं, But yes, completely fine. yeah, so I, you know, if I'm not sure about something, I won't speak on that. uh, but yes, again, हमारा थोड़ा सा कल्चर ऐसा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बस जुगाड़ पे चल रहा है, बस ठीक है। जिस दिन इंसिडेंट हो जाता है फिर कुछ देर के लिए हम सीधे हो जाते हैं, फिर वो थोड़े दिन तक जब चीजें कहते हैं, जब चीजें वो ऐसा लगता है कि भाई यार हम सीधे हो गए थे तब भी चीजें चल रही थी, बस एक क्रैश ही तो हुआ है ना, बस चलो पहले भी चल रहा था, दोबारा वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। क्योंकि जब तक आप फॉलो अप नहीं करते चीजें दोबारा दोबारा, मतलब उसको उसके अंदर जिद्दत नहीं लेके आते और उसको दोबारा इंश्योर नहीं करते, दोबारा उसको जो है ना रिकॉल नहीं करते, कॉल आउट नहीं करते, तो वो लोग करना छोड़ देते हैं, और वही हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो बिलाल, अगेन वी वर टॉकिंग के, यू नो, चलो थ्योरी ए है, वी वेंट थ्रू दैट, नाउ थ्योरी बी इज अगेन, अच्छा, द पायलट वाज ओके, इट वाजंट द पायलट्स फॉल्ट, लैंडिंग गियर कोलैप्स हुआ एंड दैट वाज द केस। अब अगेन ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक कि उस वक्त हाउ वाज शहीन परफॉर्मिंग? क्या उनके मेंटेनेंस के अंदर इशू आ रहा था? क्या वर दे मेकिंग बजट कट्स लाइक पीआईए? या मतलब आप थ्योरी ए को हमने एंटरटेन के लिए, थ्योरी बी क्या है? डज इट मेक सेंस टू यू? डज इट? Okay, so in terms of maintenance, Shaheen was doing good. Actually, they were not underpaying the staff. They were paying really good. मतलब, considering the Pakistani market and the Pakistani currency in at that time when the dollar was like 100, okay. So at that time, the junior technician was they used to get like 80,000 rupees, which is around Oh. $800. Mhm. Okay. So at that time things were really good, and with the Shaheen, they were paying the engineers a handsome amount of salary. They were paying engineers like $4,500 a month. Things were really really good with Shaheen Air in terms of maintenance. They उनके जहाज मेंटेनेंस वाइज भी ठीक थे। हाँ, उनके कुछ मतलब पूरी फ्लीट नहीं, फ्लीट में कुछ जहाज ऐसे थे जो कि MEL पे चलते थे, और उन पे हमेशा कोई ना कोई मसला होता था, और उनकी फ्लाइट हमेशा डिले होती थी। मतलब हमेशा से मुराद ये कि मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज यूजुअली डिलेड। But other than that, Shaheen was doing really good in terms of every aspect. Their crew was making good money. Their pilots were really happy. Their pilots were making good money. So you cannot say from the maintenance. But yes, the 737. If you talk about 737, that was a pretty old machine at that time. Or but like still, there was no problems found in the aircraft at that time. So that ठीक is है। the reason. That is the reason. Basically, I'll tell you one more thing. Adding to it. आज तक वो जहाज लाहौर एयरपोर्ट पे पड़ा है। आज शाहीन में, अगर आपको पता ना हो तो, शाहीन की जो इंजीनियरिंग की डिवीजन थी, that was basically a total separate company. It was named as Shaheen Air Aircraft Maintenance. Sorry, Shaheen
इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस के नाम से, सीम्स कहलाती थी वो, SEAMS, आई हैव फॉरगॉटन द एब्रिविएशन. सो जो शाहीन, और बेसिकली वो प्राइवेट अलग से इसलिए थी टू बी एन MRO. MRO इज बेसिकली अ मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑर्गेनाइजेशन. MRO में ये होता है कि आपकी जो मेंटेनेंस रिलेटेड टास्क होते हैं, एक सर्टेन एयरलाइन के अंडर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, बट then you basically offer your services to other airlines as well, being a separate independent entity. That is the reason Emirates engineering services is a totally different thing. Emirates airline is totally different thing. Emirates sky cargo is totally different thing. The nata is totally different thing. Shaheen airport services, basically जब शाहीन और शाहीन एयर और शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज शाहीन फाउंडेशन के अंडर होती थी, तो ये दोनों एक ही थे, लेकिन दे वर डिफरेंट सेपरेट कंपनीज. शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन शाहीन एयर बाद में प्राइवेटली खरीद ली गई, सो इट वेंट ऑफ. अब कमिंग टू द एयरक्राफ्ट्स दैट यू मेंशन के व्हाई दे आर देयर टुडे, ठीक है, अब उसके पीछे अगर हम रीज़न पे जाएं कि क्यों वहाँ पे इस वक्त आज खड़े हैं. 2017 के आसपास, ठीक है, एज वी न्यू लेटर ऑन द सबाई फैमिली दे वर द ओनर्स ऑफ दिस, ठीक है, एंड आई रिकॉल दिस, करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन, जो चेयरमैन थे, ठीक है, काशिफ सिभाई आई थिंक हिज नेम इज़, या he indicated a red flag for Shaheen. And I think this was in an interview with Mubashir Luqman, and he came on air, and honestly, he brought a lot of. It actually never went on air. It went YouTube पे online. online था. YouTube पे आया Online था. था. Yes, it never went But on air on TV. what he did was that he brought along a lot of courage in that interview, if you understand, or focusing on one thing के ही क्लियरली स्टेटेड कि अगर PCCA ने हमारे लिए ईजी नहीं बनाया और बाकी अथॉरिटीज़ ने ईजी नहीं बनाया, शहीन विल पैकअप, ठीक है. अब यानी आपके आगे पीछे देवर एलिगेशंस और एक वो गेम चल रही थी कि यू कैच द बॉल, नो यू कैच द बॉल, एंड whoever has the ball in his hand is the wrong one. तो इधर से देर वर एलिगेशंस फ्रॉम द डायरेक्टर्स, काशिफ सबाई, ऑल ऑफ देम के यार PCCA के साथ इशू है, हमारे साथ कोई पर्सनल इशू चल रहा है, ब्राइब्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स क्लियर नहीं कर रहे, इन्होंने मेरे ख्याल है मलेशिया के रूट्स के लिए अप्लाई किया था, इनको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वगैरह वगैरह. और फिर उस तरफ से आई जस्ट कंप्लीट द पिक्चर ऑडियंस के लिए. अब और उस तरफ से जो एक्यूजेशंस आ रहे थे वो ये थे कि इनका लाइसेंस का इशू बना हुआ है, ये स्टे ऑर्डर्स पे चल रहे हैं. फिर एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का एक्यूजेशन आया कि दे हैव बीन मनी लॉन्ड्रिंग मनी फ्रॉम ईरान. और फिर स्लोली वी सी दिस स्टीप गो डाउन, जिधर पता लगता है कि जी FIA दे हैव रजिस्टर्ड अ केस ऑन शहीन, ठीक है, डिफ़ॉल्टर है FBR को, मतलब सियालकोट को दे ओन अ लॉट ऑफ मनी, UBL को दे ओन अ विलफुल डिफ़ॉल्ट, एंड मतलब setback after setback after setback after setback. And as we know at the end he wrapped up, and even though it यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि authorities were pushing forward के both of the brothers' name end up in the ECL, but somehow they managed to leave. The question for you is, what do you think happened? Where Shaheen went wrong? क्या ये CEO और chairman की incompetency थी? क्या ये business culture का issue था? या this was something personal? That's a very tough question because मुझे बहुत मोहतात रह के इसका जवाब देना होगा. देखें, पाकिस्तान में किसी भी सरकारी इदारे में अपना कोई भी काम आपने कराना है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सीधे तरीके से तो नहीं होता. बाय द बुक अगर आप चलते हैं हो तो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपका, या शायद वो कभी होगा भी नहीं. ठीक है, जानबूझ के आपके लिए मुश्किलें क्रिएट की जाती हैं, जान आप ऑफ द बुक जाएं. ठीक है, सो एट दैट टाइम द एलिगेशंस फ्रॉम Kashif Sebai, yes, Kashif Sebai, the big guy with the big beard, okay, they were partially true, yes, unfortunately.
I won't dig into deep. I won't dig deep into that because I don't want to. But yes, partially they were true. Okay. Partially they were wrong because Shaheen Air was actually a defaulter of FBR. Yes, there is no doubt in that too. और शाहीन एयर स्टे ऑर्डर पे चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है. जो वो इंटरव्यू आया था मुबश्शिर लुकमान के साथ, बाय द वे आई हैड privilege to meet Mubashir Lukman in regards to aviation as well. So aviation का उस वक्त जो उन्होंने उसमें एविएशन इंडस्ट्री में उस वक्त जो उन्होंने प्रोडिक्शन की थी कि जी अगर हम देखेंगे साल 1.5 साल अगर हमारे साथ सिविल एविएशन ठीक तरीके से ना चली तो हम बैकअप कर लेंगे. और बैकअप कैसे कर लेंगे उन्होंने ये नहीं बताया था. सो जो शाहीन एयर का रोल बैक और फॉल आपने विटनेस किया था 2018 में, दैट वाज बेसिकली इंटेंशनल, क्योंकि थिंग्स वर रियली टाइट on both ends, from Shaheen Air also and from the CA also. ताली एक हाथ से नहीं बचती. So yes, those allegations, that interview and everything, that was basically true partially. Yes, I agree on that part, but partially I disagree with the Kashif Sabai as well at that time, because yes, Shaheen Air was defaulter. Shaheen Air इस वक्त अगर आज के दौर में, आज की डेट में अगर शाहीन एयर के लेट्स से कोई इन्वेस्टर आता है और कहता है जी मैंने शाहीन एयर के नाम से एक एयरलाइन स्टार्ट करनी है, so because that name is already registered with the SECP, FBR and everywhere, you cannot basically start Shaheen Air name. आपको वही पुराना नाम खरीदना पड़ेगा और सारा कुछ. And when you do that, you incur all the liabilities which they had left, and that goes up to around, at this point in time, considering the rupee depreciation and everything, आज के इस दौर में तकरीबन और कुछ नहीं तो वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 50,000 अरब रुपया है, जो कि अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि मैं शाहीन के नाम से कोई दोबारा एयरलाइन लेके आना चाहता हूँ, तो वो उसको पहले तो सिर्फ 50 अरब रुपया जो ओवर ड्यू किस्तें हैं, जो ओवर ड्यू, क्योंकि शाहीन एयर वाज बेसिकली वेरी स्मार्ट, यू नो, आई विल टेल यू, दे नेवर ओन्ड एन एसेट, अ सिंगल एसेट, कि भाई एफबीआर जो है ना जाके कब्जा कर ले, सीज कर ले. जो उनका हेड ऑफिस था दैट वाज लीज्ड, जो उनका हैंगर था मेंटेनेंस का दैट वाज लीज्ड, और उनका जो हैंगर था बेसिकली दैट वाज अ मोबाइल हैंगर जो कि बंद होके खुल के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं. और उनके जो जहाज थे सारे दे वर लीज्ड. उनमें से एक जहाज रह गया था पाकिस्तान में क्योंकि वो मजीद फ्लाई नहीं कर सकता था, तो वो आज भी वहीं पे खड़ा हुआ है. So basically they were very smart. They did not had any asset जिसको FBR सीज कर सकती. जहाज जो थे वो एक करके लेसर ने ऐसे मंगवाए. मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि one of my few friends were basically among those pilots, जो वो जहाज जो है ना लेसर्स को वापस जब जा रहे थे तो वो उन फ्लाइट्स को लेके गए थे. The pilots were not even given the return tickets to come back to Pakistan. लेसर ने दिए थे. One of my very dear friend, सिर्फ अगर मैं उसकी बात करूं, so Shaheen Air didn't pay him 31 lakh rupees, 3.1 million rupees. That was his 4 month salary. Bankruptcy डिक्लेयर कर दी ना, बात ही खत्म कर दी. Yes. नहीं, उन्होंने bankruptcy कभी डिक्लेयर नहीं की थी. They never declared bankruptcy. But according to some source, मतलब यही था, rumor यही था कि भाई. No, they never declared bankruptcy. They were always saying, no, we are in the middle of a deal. Saudi को बंदा investor लेके आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. They were buying time. They knew once we are out of Pakistan, once things are settled, once we are done with all this shit, no one's gonna come back for us, and nobody did. आज भी सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट में उसका केस पड़ा हुआ है, कहीं फाइलों में दबा हुआ होगा, क्लोज नहीं हुआ. तो मतलब शाहीन मासूम नहीं थी. That it was both, दोनों तरफ से चलाती थी. Yes, the ताली, मैंने आपको बोला ताली एक हाथ से नहीं बचती. They were trying to be over smart. Yes, there were hurdles created by CAA, आज भी हैं. और उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई, कमर्शियल ओरिएंटेड लोगों की अदम मौजूदगी, क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि भाई बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है. So it was not single handed thing. उन्होंने जिस वक्त वो इंटरव्यू दिया था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि भाई वो ऑलरेडी अपना माइंड बना चुके हैं कि भाई हमने पैकअप करना है. नहीं, his body language in that interview was very alarming. कि एक बंदा तंग नहीं आया होता, एक बंदा
फुल नहीं हुआ होता फ्रस्ट्रेटेड। एक्चुअली मुझे पता है, मुझे इंटरव्यू ने इतना स्ट्रेसफुल ऑनेस्टली नहीं किया था, राइट? मुझे व्हाट स्ट्रेस्ड मी आउट वाज दैट हिज बॉडी लैंग्वेज। मैंने कहा यार ये बंदा, ignoring the fact कि who's wrong who's right, we are not skilled enough to judge that, but जिस frustration में and जिस body language में he was sitting there, I was like कि यार ये एक airline का, as you said, करियाने की दुकान नहीं, airline का CEO बैठा हुआ है इस body language के साथ, तो कितना See, आगे पीछे हुआ होगा for him to be at this stage. yes, देखें दुबई एयर शो में जब एयर शो होता है तो हर एयरलाइन का सीईओ आता है। अब चाहे उस एयरलाइन के पास 3 जहाज भी हैं, लेकिन वो है तो एयरलाइन का सीईओ। आपकी कतर एयरवेज का भी सीईओ वहां आएगा, पीआईए का सीईओ भी वहां आएगा। भले पीआईए के पास आगे पीछे कुछ नहीं है, लेकिन है तो एयरलाइन का सीईओ। सो या, they were doing really good. They were encouraging bloggers. They were using digital media. They were the first airline in Pakistan basically who were properly, Airblue ने basically बाद में properly start किया था. They were the first ones जिन्होंने properly digital Facebook वगैरह से, मैं उनका Facebook page 2012 से follow कर रहा था, so I know that. Proper digital footprints उन्होंने use किए, digital assets use किए, अपनी marketing. They were out of the league of today's airline. आज की airlines जो भी हैं वो वही मॉडल किसी ना किसी तरह अप्लाई करना चाहती हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो ये लोग 330 कभी ना लेके आते। Why don't they go for a 777? Why don't they go for a 787? Why don't they go for a A350? Why don't they go for a 767? 767 आपके 330 की टक्कर का जहाज है। Why? Because they know 330 के पायलट्स आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे, 330 के इंजीनियर्स पाकिस्तान में मिल जाएंगे, 330 की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सो या, इकोनॉमिकली आप एयरलाइन के सीईओ हैं, आपने कॉस्ट बचानी है, आप बिल्कुल सही फैसला ले रहे हैं। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली just trying desperately to be like Shaheen Air, and I'm sorry you cannot be. आप शायद अपनी कोई डिफरेंट ब्रांड आइडेंटिटी बना लें, अपना कोई डिफरेंट एक प्रोडक्ट बना लें, लेकिन आप उन जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस चीज को लेके चला था, अगर आप उनको चलने देते, मैं आपको यकीन से कहता हूँ they would have definitely surpassed the number of fleet of PIA. वो PIA से ज्यादा जहाज ले आते। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद PIA was feeling little bit threatened by Shaheen Air. आज भी प्राइस की ट्रेंड सेटर PIA है। जो PIA प्राइस सेट करती है उसके बाद दूसरी एयरलाइंस अपनी प्राइस सेट करती है। और बड़ा इन टर्म्स ऑफ बड़ा लीथल कभी कभी कंपटीशन हो जाता है। आई रिमेंबर दिस बैक इन कोरोना 2020 आई हैड टू गो टू कराची। 5,000 रुपए का टिकट मिल रहा था। अच्छा, अब ये सेकंड स्टेज है। मैं पहले उस स्टेज पे भी गया हूँ। आई किड यू नॉट, मैंने रिटर्न टिकट 42 का लिया था। एंड द नेक्स्ट टाइम आई वेंट, वो नया कोविड का सीजन है, फ्लाइट्स जस्ट ओपन अप एनीवेज। और द नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू कराची विच वाज आफ्टर आई थिंक 6-8 मंथ्स, इस तरह कुछ, 5,000 5,500 का टिकट, 4,800 तक। और वो एक कांस्टेंट बैटल चली थी और पता लग रहा था कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग हो रही है। इसको बिजनेस में हम कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग टू। एंड व्हाट आई बिलीव इज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, व्हाट आई बिलीव इज के दैट वाज टू मेक एयर सियाल ब्लीड, क्योंकि एयर सियाल मार्केट में नई आई थी और ये एक बैक एंड फोर्थ चल रहा था। एंड यानी दैट्स व्हाट आई बिलीव कि इसको बिजनेस टर्म्स हम कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, और ये अनएथिकल और काफ़ी कंट्रीज़ में अलाउड भी नहीं है। सो व्हाट्स योर इनटेक ऑन दैट? You know what, I'll tell you, everybody tried their hard to bleed Air Sial, but they couldn't. Air And I'm very Sial, happy for that. because I had my friends in Air Sial, they literally had full loads, full loads. नहीं, air, yeah, And that airline had, I'm not sure if I can say this, but I would still try to, that airline had balls to start operations in the middle of Corona. 2020 के दिसंबर में उन्होंने start किया था। बिल्कुल ऐसे ही। So yeah, they're doing pretty good, and they are still lacking a lot of people who don't still know how things works. They pretend that they know, but they don't know exactly. It's But normal, ठीक है, still, acceptable है। but what I know is, what I definitely know is they will grow, because they have a huge investor hand behind them. They have So around 150 board of director members.
So yeah, बड़े they अच्छा will eventually flourish. I know. later in the other episodes we will come to this. Air Sial ने जिस तरीके से public fundraising की है and capital इकट्ठा किया, it's very interesting. It's actually, it's not really interesting. I'll tell you why. Because जो सियालकोट है, सियालकोट को इतनी इम्पोर्टेंस कभी भी ना मिलती अगर सियालकोट में एयरपोर्ट ना बनता. सियालकोट में जो एयरपोर्ट है वो भी प्राइवेटाइज्ड है, इफ यू नो दैट. That is owned by the Sialkot Chamber of Commerce guys. And why they made it? Because it was a huge cost for them to transport their goods to Lahore and then export from there. So they thought like, चलो यार ठीक है, चलो एयरपोर्ट बना लेते हैं. अब वो एयरपोर्ट क्योंकि प्राइवेट था, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल साबित हुआ, क्योंकि वो फिर उन्होंने पैसेंजर में भी कन्वर्ट कर दिया, पैसेंजर ट्रैफिक भी स्टार्ट हो गई. प्री कोविड टाइम्स में पीआईए ने सियालकोट से लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट तक इंट्रोड्यूस कर दी कि इतना लोड था सियालकोट से. So they were pretty much successful in what they were doing. And then Air Sial 2020 की बात नहीं है, मैं जब 9th क्लास में था, आई रिमेम्बर 2009 में ये जो आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, सियालकोट की चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तब इन्होंने जो है ना ऐलान किया था कि हमने एयरपोर्ट बनाया है, हम एयरलाइन भी बनाएंगे. It took them 9 years to do planning and everything and what this and that. 2019 में उनके पास आरपीटी आ चुका था, जहाजों का सिर्फ मसला था. जहाज उनको उस वक्त मार्केट में मिल नहीं रहा था क्योंकि 2019 was the peak of aviation. लेकिन वो धड़ाम से ऐसी गिरी कि फिर कौड़ियों के भाव जहाज मिल रहे थे, और उन्होंने फिर कौड़ियों के भाव जहाज ही लिए. अब talking about new competitors like Air Sial, ठीक है, for new competitors, what do you think they should learn from Shaheen Air? Of course, ठीक है, आपने branding सीख लिया, आपने थोड़ा सा business strategy सीख लिया, अब अभी भी वो use कर रहे हैं, right? But in terms of the collapse, in terms of Shaheen going down, what do you think airlines should learn, yeah, they can learn from Shaheen itself and the carrier it had? Just don't intend to shut down the airline. if you have opened it, just don't intentionally shut it down. So that's the basic thing. Other than that, what you need to do is basically सियालकोटी जो हैं उन्हें business करना आता है, ठीक है. Although airline business is a little bit different, but they learned that too. I have full firm belief in that they'll learn that too, and they'll beat everyone in Pakistan in aviation industry in the next 10 years. I firmly believe that. Why? Because वो जिस तरह इंडिया में कहते हैं ना, गुजराती जो हैं वो पक्के व्यापारी होते हैं, पाकिस्तान में सियालकोटी पक्के व्यापारी होते हैं, ठीक है. So they know how to run businesses. They know, क्योंकि वो थोड़ा सेट माइंडसेट है, so they know how to do it. And they will do it. Why? Because if they can't do it themselves, they'll hire the right person to do it, to do the job. And आपको right persons की पाकिस्तान में कमी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या है कि उनको बस ये है कि जहाँ होना चाहिए वो वहाँ है नहीं. I think it's a pretty black and white question, लेकिन still I would like to ask you this, कि अब ये depend करता है, अब I think you would know the better, you know the side better कि पाकिस्तान की एविएशन में barriers to entry कितने हैं, right, in the aviation sector for starting an airline, right? Do you think there's a possibility कि ever Shaheen comes back, if someone comes and invests back into Shaheen, yeah, you think the liabilities are just too much for someone to get dirty? Okay, if I'm a billionaire and I know that I have to lose 50 billion rupees just to clean the previous paper. However, I won't say it's impossible. Possible है. आपके पड़ोसी मुल्क में अभी recently हुआ है. Jet Airways is coming back. Jet Airways में सिर्फ problem cash inflow का था. Jet Airways could not adapt changes. उनकी अपनी गलतियां थी. उन्होंने शाहीन वाली गलतियां नहीं की थी, जो कि अपने जानबूझ के नियत करके बंद करके चले गए. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन again the liabilities are too much, profit margins are so narrow, and the market is too small for someone to think of bringing back Shaheen. Rather than that, what they will do is Shaheen Air International tha, they will start Shaheen International Airlines. ठीक है. अब
coming again, talking about airlines entering and exiting and airlines coming into the business. Currently we have around, if I'm not wrong, 4 or 5 carriers. ठीक है, आपका Air Blue है, PI है, Air Sial, Air Serene और Fly Jinnah. I'll count that in, right? Do you think market demand meet होगी है, या अभी भी we should have more airlines in the industry of Pakistan after Fly Jinnah comes in? Okay, so I'll tell you a very interesting thing. Basically, हमें लगता है कि because why I'm saying this is because of the current economic position, economic situation in Pakistan. हमें लगता है कि नई एयरलाइन आती है, although it's very good thing. पाकिस्तान में एयरलाइन बनाना बहुत जिगरे का काम है, कोई आसान काम नहीं है. तो हमें लगता है कि शायद नई एयरलाइन आएगी तो बड़ा फायदा हो जाएगा. हाँ, कंज्यूमर को फायदा है, कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, कंज्यूमर के पास प्राइस एडवांटेज आ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाएगा. कंज्यूमर को फायदा ही फायदा है. बट अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो तो एयरलाइन को कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी है नहीं, लोगों की बाइंग पावर है नहीं, मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है. जो आपका एथनिक ट्रैवलर है, जो सॉरी आपका जो एथनिक रेजिडेंट है वो एथनिक ही है, उसको बाहर नहीं जाना. बाहर अगर जाएगा भी वो तो क्योंकि मोटरवेज माशाल्लाह अब इतनी अच्छी हो गई हैं तो ही यू नो जस्ट टेक अ बस. और आपको पता है बसेस भी आजकल अच्छी खासी लग्जूरियस बसेस आ जाती हैं. सो टाइम सेंसिटिविटी ज्यादातर लोगों में इतना वो है नहीं पाकिस्तान में. उसकी एक वजह ये भी है कि ज्यादातर लोग वेले हैं. तो एयरलाइन का आना एक खुशाइन चीज है for the consumers, yes, but it will hurt the airlines itself, and not just that airline which is the new one, it will hurt all of them. क्यों? क्योंकि इसको मैं आपको इस तरह बताता हूँ. जब जो आपकी सब्जी मंडी की जो सबसे हॉट प्रोडक्ट होता है ना, although it's in my opinion, वो होता है टमाटर. क्योंकि वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है. तो जब टमाटर मार्केट में बहुत कम सप्लाई आ रही होती है तो टमाटर की प्राइस ज्यादा होती है. जब एकदम बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाती है तो लोग कौड़ियों के भाव बेच देते हैं जस्ट बिकॉज के वो सड़े ना, उसको रखना ना पड़े. सो जो एयरलाइन बिजनेस है दैट इज ऑल्सो पैरिशेबल. एंड हाउ इट इज पैरिशेबल? बिकॉज आपके जो फ्लाइट का दरवाजा है, बिफोर टेक ऑफ व्हेन द डोर इज क्लोज्ड, ठीक है, जितनी सीटें बिक गई, जो सीट खाली रह गई वो सीट सड़ गई. वो सीट बिल्कुल आपको उसका कोई फायदा नहीं है. आपको वो जो है ना वो उसकी कॉस्ट पड़ती है. अब ऑन एवरेज इस वक्त पाकिस्तान में एक एयरलाइन को 320 की फ्लाइट पे जो उसकी खाली सीट होती है उसकी तकरीबन 10,000 रुपए कॉस्ट पड़ती है. सो जब आपके पास सीट्स बहुत ज्यादा मिकदार में मार्केट में आ जाएंगी, सीट्स डंप हो जाएंगी, बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो इट विल हर्ट एवरीबडी. व्हाई? बिकॉज ट्रैवलर उतना ही है, ट्रैवलर ग्रो नहीं कर रहा, ट्रैवल पैसेंजर ग्रो नहीं कर रहा, और आप सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ा रहे हैं. अब उससे अभी इस वक्त आपको पता होगा कि फ्लाई जिन्ना वाज सपोज टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन जून. एक्चुअली उनके 3 जहाज रेडी हैं, ठीक है, बट I won't take names, but a few local airlines have raised this concern to CAA, which I am telling you कि भाई जब ये भी एयरलाइन आ जाएगी, ट्रैवलर इतना ज्यादा है ही नहीं, तो it will hurt all of us, including them. फ्लाई जिन्ना को फर्क इसलिए नहीं पड़ता because they have आशीर्वाद of Air Arabia. I had the opportunity to interview the CEO of Air Arabia as well, and he was pretty much optimistic at that time because that was in November 2021 and at the Dubai Air Show. लेकिन अभी पाकिस्तान के हालात कुछ डिफरेंट है. अगर अभी मैं उनका जाकर इंटरव्यू करूंगा तो he'd be telling me things otherwise. और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस वक्त जो फ्लाई जिन्ना ने जितना क्रू हायर किया था लोकली चलाने के लिए, वो सारा क्रू शारजा जा रहा है, जो कि एयर अरेबिया पे फ्लाई करेगा. Which tells you that Fly Jinnah has been postponed for a while because
the economic conditions does not suggest कि एक और एयरलाइन आए, because एक और एयरलाइन के आने से बाकी सारी एयरलाइंस जो हैं वो हर्ट होंगी, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो आपकी जस्ट वन लेट मी कंप्लीट, तो जो आपकी फ्लाइट्स हैं वो सॉरी जो आपकी सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो आपके जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सो या अच्छा, तो वी टॉक्ड अबाउट कंपटीशन एंड ऑल ऑफ दिस। अब हम थोड़ा इंटरनल कल्चर की तरफ आ गए हैं। बस जस्ट टू रैप दिस अप, यू रेज दिस क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड दिस राइट, और मैं इधर गलत भी हो सकता हूँ कि अब एयरलाइंस देर फीलिंग थ्रेटन कि यार अनदर एयरलाइन इज़ कमिंग इन राइट। एंड डू यू थिंक कि अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार एक और बंदे ने बिज़नेस खोल लिया, सो दैट्स अ थ्रेट टू अस, या फिर अप्रोच ये होनी चाहिए कि यार ओके नाउ वी हैव मोर कंपटीशन एंड वी शुड बिकम बेटर। नाउ हियर्स द थिंग, हियर्स दिस इज़ माय फर्स्ट पार्ट राइट। सेकंड पार्ट ये है कि व्हाई आई लव एंड आई वांट मोर एयरलाइंस टू कम इन, मे बी अ कपल मोर, इज़ के कस्टमर को, अब जैसे यू सेड इन द बिगिनिंग कि जब फ्लाई जिन्ना आएगी फिर सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा राइट, इन टर्म्स ऑफ इन फ्लाइट मील सर्विसेज। तो मैं चाहता हूँ कि यार हमारे कंज्यूमर, हमारे कस्टमर को पता लगे कि यार प्रोडक्ट वैरायटी क्या होती है, प्रोडक्ट्स में चूज़ कैसे करना है, और व्हाट डू वी गेट फॉर, और हमारे पास ऑप्शंस हो राइट। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? Okay, so first of all, the airlines feel threatened because it's a foreign investment. Talking about Fly Jinnah, because they know Air Arabia is a big giant, which they cannot compete, and they feel threatened because of that. और जो आपने बात की कि there should be more couple of airlines and people should know that there is product variety और ये और वो, सर ऐसा है कि इस वक्त लोगों को ये पता ही नहीं है कि जहाज में बिजनेस क्लास भी होती है, या क्लब क्लास भी होती है। I'll tell you, that was in last year, December 2021. My wife was flying for the first time, and she was flying Saudi Airlines. She was flying from Islamabad to Jeddah. So because she was flying alone, so I booked her on business class. What she told me was the business class was completely empty, and she was the only one sitting in the business class. Why? Because people don't know exactly who flies the business class, or how a business class actually looks like. आपको कतर पे, एमिरेट्स पे, इत्तेहाद पे जो फ्लाइट्स पे, इन फ्लाइट्स पे लोग नजर आते हैं बिजनेस क्लास पे ट्रैवल करते हुए, वो इसलिए नजर आते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू यूएस, कनाडा, टर्की, यूरोप. They live there, they know what's the difference, and they know what a business class looks like. So जो आपका local, जो आपका resident traveler है, maybe if he has been to, you know, a world tour somewhere, or if he can afford to have different products, maybe then. But एक जिस मुल्क में आपकी जो है ना इतनी सारी आबादी को खाने के लाले पड़े हों, so they don't give a damn about products on board. At that point in time, when it comes to people like me, like you, to bring awareness in the society कि भाई एविएशन जो है वो ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, and that is basically what I aim for. पाकिस्तान में अगर आप एविएशन को ग्रो करता देखना चाहते हैं, सो इट हैज अ लॉन्ग 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 वे टू गो, और शायद मैं और आप अपनी उम्र में तो शायद देख भी ना सकें, शायद हमारे बच्चों को देखना नसीब हो, क्योंकि अगर आपको एक पूरा सिस्टम चेंज करना है, तो उस सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको उस सिस्टम को बहुत एक लंबे अरसे तक फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप उस पोजीशन में आ जाएं कि आप उसको चेंज कर सकें. So I believe what I can do from my side is to bring awareness. That is why, hence the Aviation Geeks, it came into being. And whatever I make, whatever the content which I try to promote, is because that I want people to learn about it. Because जहाज जितना फैसिनेट करते हैं बच्चे को पायलट बनने के लिए, उतना ही फैसिनेट करते हैं उनके बारे में पढ़ते हुए कि अच्छा यार ये होता है. आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें एक सेकंड के लिए, अभी बैठे बैठे, कि एक जहाज बोइंग 777 फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट सक्सेसफुल फ्लाइट तब करता है जाके जब 6 मिलियन पार्ट्स
एक साथ करेक्टली अपना काम सही से करते, 6 मिलियन 60 लाख पार्ट्स। easy to say. ठीक है, आपको बात करते करते आपके रोंगटे खड़े होते हैं, फिर आपका दिमाग कहता है, आपका दिमाग थोड़ा सा खुलता है कि यार अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, आप A380 की बात कर लें तो वो तो आपको देख के आप हैरान हो जाएंगे कि ये उड़ती भी है या नहीं, ये उड़ती है भी, ये चीज उड़ती भी है। सो या थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम्स एग्जैक्टली। जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं उनके लिए मसला नहीं है, जो हमारा रेजिडेंट है पाकिस्तानी, उनके लिए तो एयर ट्रैवल इज अ लग्जरी। वो अगर कभी एक दफा किसी छोटे जहाज में भी बैठ जाएं जिंदगी में, शायद एक दफा अगर कोई बैठता भी है तो उम्रा हज के लिए जाते हुए बैठता है, और वो उनके लिए वही दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी है कि बस वो एक दफा जहाज में बैठे हैं। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी नहीं, I बहुत agree with बड़ी that. आबादी है जो जिसकी ये सिचुएशन है कि वो जिंदगी में सिर्फ एक दफा हज या उम्रे पे गए थे और बस उन्होंने वो तब एयर ट्रैवल किया था। दैट्स इट। So yeah, Bilal, thank you so much. It was a great insight. Okay, we learned a lot, and again, just let the audience know where they can find you, and what are your future plans? So basically, I believe on the screen you can see my Insta handles. You can find me through those. You can find me through my website, through my YouTube channels. And the future plans for me with Aviation Geeks is that we are having 3 series right now going on our channel, which is one is No Aviation, in which basically you learn different things about aviation, and the other is Aviation Now, in which I basically discuss the current affairs. किसी एयरलाइन ने ऑर्डर दे दिया है, कोई फ्लाइट टर्बुलेंस हो गई है या व्हाटएवर, इस तरह की जो डेली करंट अफेयर्स की, और बेसिकली आई आल्सो डू दैट पर्टिकुलरली द रीजन, मैं बाहर नहीं जाता ज़्यादा। और उसके अलावा द एविएशन आवर पॉडकास्ट, जस्ट लाइक दिस फॉर्मेट, where I'm inviting people from different domains, from different races in the aviation industry, ताकि वो आए, वो अपना ओपिनियन शेयर करें, वो हमें बताएं, वो हमारी मिथ्स को क्लियर करें, वो हमारे डाउट्स को क्लियर करें। इतना मेरा अकेले का बोलने का फर्क नहीं पड़ता जितना 2 लोगों का फर्क पड़ता है। सो या it will feature all of the people. I had an aviation artist, I had pilots, I had people from civil aviation, I had people from PIA, I had people from foreign organizations, foreign airlines, ex-A380 pilots. So yeah, pretty much all the people I had. Or inshallah very soon we'll be having a lot of different the next which I'm aiming is to have people from aviation management side, airline managers, IT directors, brand managers, marketing managers, ताकि जो एयरलाइन की मार्केटिंग है या एयरपोर्ट की मार्केटिंग है कैसे होती है हम उसको भी समझ सके। सो for that matter you have to stay tuned because we're doing only once a week. I have long list of podcasts which I've done already, but they cannot be published because they will come only on the schedule. So yeah, you can follow the channel for that matter. Thank you so much, Bilal. Janab, thank you so much for tuning in. Please try to just leave some feedback for us, negative, positive, any constructive things you can just leave it down in the comment section. Thank you so much for watching and see you in the next episode.